welcome back to our channel. Rating over it, बाकी गाइस माइनक्राफ्ट की वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे दोनों वर्ड जो पहले हमने सरल से स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2-3 आ गए थे शायद से, तो वो गलती से वर्ड डिलीट। और ये भी पता नहीं है मेरे मोबाइल में क्या ही प्रॉब्लम है जो बार बार वर्ड डिलीट होते जा रहे, तो इसलिए माइनक्राफ्ट की वीडियो नहीं आ रही। तो आज हम खेल रहे रेटिंग ओवर की, क्या बोल रही है रेटिंग ओवर। तो बिना किसी तरीके हमारी वीडियो चालू करते हुए इंट्रो लगा के इन 3, 2, 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। चढ़ता ही नहीं आ रही, तो गाइस मैं आपको उधर ऊपर चढ़ के मिलती हूँ। Sexy Hiking. The author of that game is Jazzuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. नहीं क्या ये मैं आपको वापस से ऊपर ही मिलती हूँ। फाइनली कैसे क्या है मैं घर पे पहुँच गई हूँ। ये क्या यार मुझे क्यों जा रहा है आराम से बेटा। ये ओह क्या है भाई, मैं तो बाहर निकल के आ जाता। ओ क्या ये लगता है इसको है ना शायद से फास्ट में करना है बिल्कुल कोने पे। कैसे यार, अबे जाना भी ऊपर। In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. फाइनली आ गया। तो इधर निकल गए थे। नहीं Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. भैया क्या यार मुझे समझ बेटा अगर तू इधर से नीचे गिरा ना सच में बस थोड़ा सा बस इधर पहुंच जा तू प्लीज।
तो मुझे शायद से उधर जाने का है। The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turn नीचे नहीं इधर से इधर नहीं, नीचे नहीं गिरना है, नीचे उसके बाद मैं तो सब ये फास्ट फॉरवर्ड कर लेती हूँ और स्पीड रन वाला गेम तो गाइस अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पे हो तो प्लीज़ से कर देना सब्सक्राइब। और क्रिएटिव हॉबीज तो बहुत खतरनाक है मेरा, तो बाकी आपको मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मैं इसे थोड़े से मार दूंगा। बाय।